Hello, welcome to today's session. In the previous session, we have seen how to reverse a linked list. Today, we are going to start doubly linked list. Doubly linked list is the linked list having nodes connected to each other, similar to singly linked list, except the fact that each node here consists of three fields now. One is data, other two are pointers. These pointers are the pointer to previous and the next data. So first of all, we will see how to create a linked list, and then we will see what are its benefits and unprofitability. Now how to create a doubly linked list. So first of all, this is our head pointer. This is our first block. This first block consists of three fields. One is data, other is pointer to the next data. So let's say the address of next data is x. This will be null. Our next data will again consist of three fields. The data is 4 and the address of this is x. Let's say the address of the third node is z and the address of previous node is, let's say, y. So this is y, this is 4, this is x. Again, I'll create new node. This node consists of again three fields which consists of data, let's say 6, and the address of previous node is x, and the address of new node is, let's say, w. Again, I have the node w. This w is the last node, so this is null, and the address of this is w, and data is 8. Also, the address of previous node is z, so it is z. So this is our newly created doubly linked list. Now, how do we insert the element at the very beginning? How do you insert? So to insert the element at beginning, at the first position, you have to create a node consist of three fields again. This node will contain some data. Let's say we have some data as 10. Now, first of all, I'll change this null. This null is going to be changed with my newly created node. Let's say this null is uh, the address of this is b, so this null will be replaced by b. As this b is inside this first node, so this will create a link between this 10 and this 2. Now you have to fill this particular thing with y. So as this holds y, so again the second link is created here. So this is one way and this other way. You can traverse between it. After that, this y needs to be replaced with this b. So as soon as this y replaced with b, I have an eraser. I erase it and put b inside it. So this b starts pointing towards this. As this is the new node, so it is by default null. So this is how you create and insert the element at the very beginning. Now, what if you want to insert the element at nth position in between any run, like this 4 and this 6? If you want to insert the element 5 in between 4 and 6, how do you insert that 5? This is 5. The rest of the 2 pointers are initially null. So how do you insert? First of all, you have to replace this. You have to fill this block with the address of this, and the address of this is, let's say, z. We have this z here. So first of all, we will put z here so that this link will create. After that, we will replace this z. We will replace this z. This z will replace by our this new pointer, and the new pointer is, let's say, c. So this z will replace by c. This z will replace by c. So this is how this link is created. But from here we can traverse here, but from here we cannot traverse towards x. So for that, what we need to do, we need to set this. We need to set this pointer. This pointer need to be set. So this x needs to be here so that this link will be created. Now the only thing which is left here is, now at this point of time, this link is now broken. Now the only thing is that this is still left. This x needs to be changed. So in order to change this, we will shift our temporary pointer from 4 to 5, then 5 to 6, and then this x will replaced by c. So I'll erase this x and fill the c here so that this link is created. This is how you insert the element. Now the only thing left here is the last element. So how do you insert the last element?
traverse from the very first node and till the last node, till you don't get null to traverse, and after that simply insert the element, put the address of new node. That's it. So let's start digging into the code. मैं यहाँ पर एक नोड बना रहा हूँ. इस नोड के अंदर 3 फील्ड होंगी. एक होगा हमारा डेटा और 2 होंगे हमारे पॉइंटर्स टू द डेटा. वन इज नेम्ड एज प्रीवियस एंड अदर इज नेम्ड एज नेक्स्ट. नाउ व्हाट विल डू, अब हम यहाँ पर एक हेड पॉइंटर बनाएंगे जो हमारा ग्लोबल पॉइंटर होगा, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं विद इन अ मेन फंक्शन एंड विद इन अ यूजर डिफाइंड फंक्शन एज वेल. नाउ आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन जो हमें एक नया नोड बना के देगा. जब भी हमें नया नोड बनाना होगा तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे. आई एम नेमिंग इट एज गेट न्यू नोड. ये एक आर्ग्यूमेंटेड फंक्शन होगा जो एक एक्स वैल्यू लेगा, क्योंकि हमें जब भी नया नोड बनाएंगे हम, तब हम प्रीवियस और नेक्स्ट को तो नल से फिल करेंगे और डेटा को जो है हम डेटा से ही फिल करेंगे. सो फॉर दैट पर्पज आई एम मेकिंग न्यू नोड. नाउ दिस न्यू नोड will initialize the previous as null, also the next as null, but the data is filled with data only, which is x. It will return the pointer. This pointer is the address of new node. तो जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा हम उसे रिटर्न में एक पॉइंटर देंगे, जैसा कि हम हर बार करते हैं. हमें उस पॉइंटर की आवश्यकता होती है. नाउ आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन जो हमें हमारे नोड को सबसे पहली पोजीशन पे लगाने के लिए हेल्प करेगा. So what is the name of that function? Insert at head. So I am making the function insert at head. This insert at head is again the argumented function जो एक वैल्यू ले रहा होगा. नाउ जो नोड हमने यहाँ पर बनाया है, इस नोड से ही हम एक नया नोड बनाएंगे. उस नोड के लिए एक्चुअली हम यहाँ पर गेट न्यू नोड को कॉल कर देंगे और वहां से जो पॉइंटर आएगा हम उसको न्यू नोड में रख लेंगे. नाउ दिस न्यू नोड विल सेट द डेटा एज एक्स. नाउ हम कंडीशन चेक करेंगे कि अगर हमारे हेड की वैल्यू नल के बराबर हो जाती है, इसका मतलब ये है कि हम पहला इंसर्शन कर रहे हैं और पहले इंसर्शन में हम हेड को न्यू नोड में, पहले इंसर्शन में हम न्यू नोड को हेड में डाल देंगे और यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे. दैट्स इट. इसके बाद हम हेड डॉट प्रीवियस में न्यू नोड को डाल देंगे और न्यू नोड के नेक्स्ट में हम हेड को डाल देंगे और फाइनली हेड को हम रिप्लेस कर देंगे हमारे न्यू नोड से. दैट इज द सेम थिंग विच आई हैव रिसेंटली shown to you. So this is our inserted head. तो यहाँ इस पूरे फंक्शन में ये जो प्रक्रिया हो रही है, this is we are manipulating the address only and which we have seen recently. Now the next function is insert at tail. So how to insert a function at tail? So to insert at tail, I am creating a function insert at. This insert at tail is again an argumented function. This argumented function is again creating a टेम्परेरी पॉइंटर. ये टेम्परेरी पॉइंटर हम हेड से चालू करेंगे और इस हेड को हमें कब तक रन करना है, तब जब तक हमारा लास्ट नोड नहीं मिल जाता. लास्ट नोड कौन सा होता है जिसमें हमें नल मिलता है. सो न्यू नोड. तो न्यू नोड के लिए हमें यहाँ पर एक न्यू नोड बनाना होगा. दिस इज गेट न्यू नोड. दिस गेट न्यू नोड फंक्शन. नाउ अगेन अगर यहाँ पर हमारा हेड नल होता है, दिस इज द कॉर्नर केस वी हैव टू टेक केयर ऑफ. दिस इज द केस जब हमारा पहला इंसर्शन है, तो अगेन हम यहाँ पर सेम चीज करेंगे. हम यहाँ पर न्यू नोड को उठाकर हेड में डाल देंगे और यहाँ से रिटर्न जाएंगे बिकॉज दिस आर फर्स्ट इंसर्शन. पर ऐसा नहीं होता है ना, तो उस केस में हम जब तक टेम्प डॉट नेक्स्ट हमें नल नहीं मिल जाता, जब तक हमें टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, एंड एज सून एज वी फाइंड द टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, as soon as we find temp dot next equals to null, we will simply replace the null with the new address. So temp dot next is equals to the new node, which is new. What is new node? This is new node, and this new node previous will get changed with temp, because temp is holding the address of the x last node, because the last node is now x last node. So this is inserted tail. Now I'll show you how to insert at nth position. So again, I'm creating a function. I'm naming it as insert at nth. That's it. Again, it is argumented function.
but argument this time the arguments are two, because y is the position. You have to decide the position as well. यहाँ पर मैं एक नोड बना रहा हूँ, नोड बनाने के लिए मुझे गेट न्यू नोड को कॉल करना होगा, गेट न्यू नोड विद द आर्ग्यूमेंट एज एक्स. नाउ हम चेक करेंगे इफ अगर हमारी पोजीशन y इक्वल टू हो जाती है 1, दैट मीन्स ये अगर हमारा पहला इंसर्शन हो जाता है तो उस केस में हम हेड डॉट प्रीवियस को ptr के बराबर रख देंगे. दैट मीन्स ptr को उठाकर हम हेड डॉट प्रीवियस में डालेंगे. ptr डॉट नेक्स्ट में हम किसको डालेंगे, हेड को डाल देंगे. और हेड इक्वल्स टू ptr, दिस इज इंसर्शन एट बिगिनिंग ओनली, नथिंग एल्स. दैट इज द सेम थिंग which we are doing so far. So now what we are going to do is creating a temporary pointer. Why creating a temporary pointer? Because in order to reach to the destination, अगर मुझे पहली पोजीशन से स्टार्ट करना है और मुझे फिफ्थ पोजीशन पे लगाना है तो मुझे टेम्पररी पॉइंटर से फोर्थ पोजीशन तक जाना. नाउ आई विल रन अ लूप. ये लूप मैं i इज इक्वल टू 0 से चालू करूंगा और इसकी जो नंबर ऑफ आइटेशंस होंगे वो i लेस देन y माइनस 2 तक होंगे. नाउ इफ यू आर वंडरिंग के हम यहाँ पर इस तरीके से लूप क्यों रन कर रहे हैं, तो दैट इज द सेम थिंग जब हमने इंसर्शन एट nth पोजीशन इन लिंक लिस्ट देखा था, नॉट इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट. जब सिंपली लिंक लिस्ट हमने देखा था तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. तो नंबर ऑफ आइटेशन हमेशा हमें उससे 2 कम लगते हैं जिस पोजीशन पे हमें एलिमेंट लगाना होता है. तो आपने अगर वो नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख सकते हैं. टेम डॉट नेक्स्ट, देन ptr डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम डॉट नेक्स्ट. वाई आई एम डूइंग दिस, यहाँ पर मैं मेरे नए नोड का नेक्स्ट पॉइंटर को फिल कर रहा हूँ मेरे टेम्परेरी पॉइंटर, यानी कि मेरे लास्ट एलिमेंट के जो यहाँ पर मैं मेरे नए नोड की नेक्स्ट फील्ड को भर रहा हूँ मेरे टेम्परेरी पॉइंटर की नेक्स्ट फील्ड से, सो दैट एक नई लिंक क्रिएट हो सके बिटवीन माई न्यू नोड और उसके आगे वाले नोड के बीच में. नाउ आई एम राइटिंग टेम डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू ptr. नाउ व्हाई आई एम डूइंग दिस, तो इससे मैं एक लिंक स्टेब्लिश कर रहा हूँ जहां पर अभी मेरा टेम्पररी पॉइंटर है और मेरा जो नया नोड है उसकी एक लिंक स्टेब्लिश कर रहा हूँ. नाउ ptr डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प, ptr डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प. इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर जो नया नोड लिया है उस नए नोड की प्रीवियस फील्ड को हमने टेम्पररी पॉइंटर से फिल कर दिया है, सो दैट एक सो दैट ptr डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प का मतलब है कि जहां पर हमने नया नोड ptr डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प से हमने हमारे नए नोड की प्रीवियस फील्ड में हमारे टेम्पररी पॉइंटर को रख दिया. दैट मीन्स कि हमने एक रिवर्स बैक ट्रैकिंग जो है वो भी इनेबल कर दिया अब हमारे न्यू पॉइंटर और उससे पहले वाले नोड के बीच में. नाउ नाउ द ओनली थिंग रिमेनिंग हियर इज दैट आपको आपके नए नोड के बाद वाले नोड के प्रीवियस फील्ड में अपने नए नोड का एड्रेस डालना है. उसके लिए आपको आपके टेम्पररी पॉइंटर को 2 स्टेप आगे ले जाना पड़ेगा, बिकॉज टेम्पररी पॉइंटर अभी नए नोड से पहले वाले पॉइंटर पे. तो टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट. एक बार मैंने ये करा, इसके बाद एक बार और करा. नाउ आई एम एट द राइट पोजीशन और अब मैं इसकी प्रीवियस फील्ड में मेरे नए नोड को डाल दूंगा. सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट. सो टिल हियर यहाँ पर आपका इंसर्ट एट nth पोजीशन, इंसर्ट एट टेल और इंसर्ट एट हेड तीनों एक साथ हो चुके हैं. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फॉरवर्ड प्रिंट एंड रिवर्स प्रिंट. So I am writing the function for forward print and reverse print. The forward print is self-explanatory because we have discussed it many times. I'll create a temporary pointer which starts from head. I'll make it forward list. While temp not equals to null, it is continuously printing the data. Also, it will reinitialize the temp as temp dot next. This is our forward print. Now in order to reverse print के लिए आपको क्या करना होगा? रिवर्स प्रिंट के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा. तो रिवर्स प्रिंट के लिए आपको आपका टेम्पररी पॉइंटर पहले आपके लास्ट एलिमेंट के नल पोजीशन तक लेकर जाना जरूरी है. दैट मीन्स आपके टेम्पररी पॉइंटर को नल से स्टार्ट होना होगा और वो आपका नल कहाँ होना चाहिए, वो आपका नल होना चाहिए आपके लास्ट एलिमेंट के बाद. तो अगेन आई विल स्टार्ट विथ, आई एम मेकिंग इट रिवर्स प्रिंट. I again start with head.
while temp dot next not equals to null, it will reinitialize but not print. Okay, I think it is fine. Now I'll write reverse print while temp not equals to null. Now I'll do the same thing. It is temp dot data. Now it will print the data and shift the pointer to the previous position. Now all you need to do is just changing the line here. Absolutely fine. Now I'm making an insert function just to give them a call. Initially we'll mention head is null, then insert at, let's say insert at head is 2, insert at tail is 4, then I give a call to insert at head again with the value as 6, then insert at nth position, insert at nth position with the value as 8 comma 2. So in the second position it will put 8 as the element. Now I'm making it a forward print, also reverse print. Finally, now we are done with the coding part. So let's do one thing first. Let's check for any error or spelling mistake we have committed, because it is always a good idea to check for the spelling mistake or error we have committed. I'm checking. So till here everything is fine. Yes, this needs to be X, and yeah, till here no any mistakes. Okay, this must be capital N. So I'm making it run. So yeah, it is working absolutely fine. The forward list is 6824 and the reverse list is 4268. Now moving on to the advantages and disadvantages of doubly linked list. So the very first benefit of doubly linked is that it allows you traversing in both directions. Because of the next and previous pointer available, the traversing becomes very much easier, unlike singly linked list. After that, the deletion is very easy. Why? Because say, let's understand this concept with the help of one example. If you have a doubly linked list, and these are some mid nodes available between head node and tail node. अब अगर आपको यहाँ पर इस नोड को डिलीट करना है, तो आपको इस नोड पर जाके और नया पॉइंटर बनाने की और उतने मैनिपुलेशंस करने की बजाय आप यहाँ पर सिंपली ये कर सकते हो, एज द लिंक लिस्ट इज बाय डायरेक्शनल, आप यहाँ पर नेक्स्ट नोड के प्रीवियस पार्ट में प्रीवियस को डाल सकते हो और प्रीवियस पार्ट के नेक्स्ट पार्ट में आप नेक्स्ट को डाल सकते हो. सो इट इज वेरी मच इजियर, द डिलीशन बिकम्स इजियर, और सिंपली जो पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा होगा उसे आप फ्री कर दोगे. Soon after this, no need to reverse the linked list, because as the linked list is already bidirectional, so no need to reverse the linked list as well. All you need to do is traverse from tail to head. Easy insertion before a given node. किसी भी given node से पहले insertion बहुत ही easily हो सकता है. We have already seen this in our video. Furthermore, the disadvantages are that it consumes extra space. After that, it is impossible to access the list element randomly, because if you want to access the element randomly, that is the same thing, the problem we face in singly linked list as well. The modification of two pointer consumes extra space as well. So these are some disadvantages of our doubly linked list. I hope this video is useful to you. This is all about doubly linked list. See you in the next session.